Good evening, viewers, and welcome to this month's edition of Startup Speaks. This is the program conducted under the aegis of NASSCOM 10,000 Startups, where we showcase and celebrate the rising stars in our startup firmament. And our guests today are Kaiser Malik, who's the founder of Bay With You, Gurvinder Singh, who's the founder of Chalgenius, and last but not the least, Biswajit Paul of QuickObook. So, Kaiser, let's start with you. Tell us a little bit about your entrepreneurial journey. What made you want to become an entrepreneur in the first place? All right. Thank you for Avik for inviting me on this panel. So I started my entrepreneurial journey when I was in class 10th. So I had this vague idea of starting a social network at a pretty early stage, and from there I started to learn coding and trying to do uh, things which could help me to build that social network. So when I started, I remember I was in class 11th. I failed in class 11th, and and that what gave me a kick to do something and prove myself. So I started. So I built this platform called Pixter.com, which which gained 11.5 lakh customer base in 6 months Wow. from Okay. scratch with no one, no help from the outside, and just from my home, sitting on my laptop, studying for my 12th exam. So that's how all it started, and then so after that, after here I was not very convinced that it is solving a problem. So I just switched on with another thing called Cupid. So I was in Bangalore. I remember it is in 2014, and Mm-hmm. Cupid was pretty famous at that time, right? Cupid was pretty famous at that time, and Cupid was among India's top five startups in 2015, and I became the brand ambassador of Lenovo at that time. So for Uttar Pradesh, my state where I live in, and after that, Cupid became a big success, and I had an exit, a small exit, not a big exit, a small exit. So I was in my second year of college at that time, right? So after that, I switched on to Mall Square, which was solving the problem of the small businesses at malls. Like, how do I bring them online? How do I solve the problem? Mm-hmm. How do I increase the sales? Like, people are going inside malls and purchasing, but that was the time when online e-commerce was booming and malls were suffering. So I tried to actually help out these people, but I failed miserably because I was too young. I was in my third year, and at the time, pressure was also there from the family people, right? So you have Right. to finish your engineering and everything. So I Mm-hmm. tried my best, but then it had to somewhere stop. And so I completed my engineering, got an internship at Goldman Sachs, but uh, my entrepreneurial spirit was totally alive. So I quit that internship, and I Wow. Okay. I thought of doing something which makes a difference in the lives of the people. And Mm-hmm. for me, the problem was having everything in a single place, but with a proper execution, because many of the people have tried before the local discovery thing and everything. So what I'm trying to do with Bay is I'm trying to help local businesses as much as possible, help brands, and bring you know solve people's daily needs. If someone wants X, Y, Z, Bay is there for you before anyone else. So that's a brief story, right? Right. And when did you start your journey as far as Bay is concerned? So it started all back at 1 year ago. So I had this idea that एक साल हो गया है college को, and I have Mm-hmm. to do something because I was working in Ministry of Culture at that time. I had a friend who said, let's do something. So he said, I had a friend who was a owner of a company. He runs a 200 people company, and he said, Okay. "You become my chief assistant." He was the CEO,
and you handle all these projects. So I was a part of Mahatma Gandhi's project launch, website launch, and all that, all of this, all of this. I mean, the projects involving the government projects. So I pretty much learned there, and then I decided to start Bay, and build the platform, and initially, step by step, uh, it is coming to form. Right. Okay, great. So, I mean, just knowing about your entrepreneurial journey, it's very clear to me that you're very young in years, but you're an absolute veteran and you're a seasoned entrepreneur as well. And we I shall mean, obviously know more about your journey, but it's great that you have that entrepreneurial spirit in yourself, and where anybody else, right, might have given an arm and a leg to join Goldman Sachs and say, okay, the internship, can that just segue into a permanent job? And then, right, मेरा life set हो गया, my life बन गया, right? You have right, chosen to leave that very secure, very posh, very prestigious, kind of a position and career path to come back and be your own boss and do your own thing. That's really, really commendable. We'll come back to you for more questions. In the meantime, Gurvinder, why don't you tell us a little bit about your entrepreneurial journey? How did you get Okay. started, and how did you come upon this particular idea that you're So, currently working with? yeah, thank you, sir. First of all, thank you for giving me the opportunity to speak. So, I am practically a journalist by profession. Okay, that is my main profession, and I have worked with brands like the Statesman, Network 18, and others. So, still, I am working as a journalist. That remains to be my core profession. So, Mm-hmm. when I was doing, even I left Statesman in 2017, and then I started as an independent journalist. So I was working with some media houses who are into this, covering the startup story. So as a journalist, I was given the responsibility to cover the startup story. So I was Okay. covering, but yes, I was covering that. Going and taking the interviews of people. But doing that, I found that every media house, who is covering a startup story, is more interested in numbers. So they used to. The first question was, what is the turnover of the company? So the Mm-hmm. more the high the turnover, they are only going to give the coverage to the company which is having 200 CR, 400 CR, 20 CR company. Okay, but what about those? Okay. So I realized that see, I cannot tell them to do a story of any company that is just started. They will not do, and they are paying me for it. So I have to be very clear. ये बहुत clear हो कि वो जो बोलेंगे मुझे वही करना होगा क्योंकि उन्होंने they have paid me for that. आई सेड इससे फायदा क्या हो रहा है अगर जिसका 400 करोड़ टर्नओवर है उसको मीडिया की दरकारी क्या है ही डजंट नीड एनी मीडिया Exactly. ना उसको जरूरत ही नहीं है, उसको आज जरूरत उसको ही नहीं जरूरत है. ही नहीं है आज अगर हम बंधन बैंक की बात करें आई इंटरव्यू द ओनर सो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग द स्टार्टअप लाइक वाम मोमो दे हैव अ टर्नओवर ऑन 100 सीआर ओवर 100 सीआर उसको मेरी क्या दरकार है सर वो क्यों इंटरव्यू देगा अपना है और देके भी क्या फायदा है और वो उसको दो तीन लोगों के बीच शेयर करेगा हाय हेलो होगा बात खत्म तो उससे हाँ. पर्पस सर्व नहीं होगा तो मुझे लगा कि ऐसा ब्रांड क्रिएट करना चाहिए जहां हम हर स्टार्टअप को कवर करें जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जिसने जर्नी स्टार्ट की क्योंकि उसको विजिबिलिटी तभी दरकार है ठीक है उसको विजिबिलिटी तभी दरकार है जब उसने स्टार्ट किया है तो हम क्यों ना उसका आर्टिकल करें लिखें कि भाई ये एक नया स्टार्टअप है ये एक मार्केट में आया है ये कंसेप्ट लेके लोगों को बताएं कि देखिए ये है अच्छा ये हमने शुरू किया सर फरवरी में ये कंसेप्ट लेके नवंबर से मेहनत की और इस साल फरवरी से शुरू किया एक और बहुत चीज जो मुझे लगी कि जो मीडिया हाउसेज इन स्टार्टअप को कवर भी करते हैं सर उनसे इतना भारी पैसा लेते हैं कि इन बेचारों की हिम्मत नहीं होती कि वो उतना पैसा दे पाए Yes. सपोज बिल्कुल. आप एक स्टोरी करवा रहे हैं आपको बोला गया कि एक स्टोरी का आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा या 50,000 रुपए देने पड़ेंगे तो एक मुझे तो ये लगा कि एक स्टार्टअप की तो बेचारे की कैपिटल इतनी नहीं है तो देगा कहां से दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट देयर शुड बी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम आल्सो अच्छा एक दूसरी बात ये भी हो गई सर दो दो चीजें हमने सॉल्व की एक जो हमारा कंसेप्ट उसमें हम पैसा बहुत ही कम चार्ज करते हैं नेगेटिव चार्ज करते हैं और दूसरी बात ये कि हम अर्ली से स्टार्टअप को लेते हैं तीसरी बात सर जो मैंने सॉल्व की है कि सिर्फ उनका इंटरव्यू करने से ही सॉल्यूशन नहीं होगा या उनको लोगों के पास ले जाने से ही सॉल्यूशन नहीं होगा आज हमने पढ़ा कि 90% अब स्टार्टअप बंद हो जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे एक बहुत बड़ी है वो लैक ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो कि उनको मार्केटिंग नहीं क्रिएट कर पाते हैं अपना तो हम क्यों ना उनको उन लोगों तक पहुंचाएं जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उनको क्यों ना इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएं उनको कनेक्शन करें एक तो मीडिया हाउस Mm-hmm. पब्लिश करिए पर साथ साथ उनको उन टारगेट लोगों तक पहुंचाए सपोज मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल विश्वजीत मैं टेल यू जस्ट एग्जाम्पल इफ इज वर्किंग टू डेयरी फार्मिंग तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पे रहेगा उन लोगों से जो डेयरी फार्मिंग करते हैं तभी उसका बिजनेस ग्रोथ होगा ना सर अगर वो उन लोगों से Mm-hmm. लिंकअप होगा तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू रीच द टारगेटेड ऑडियंस इनको वहां तक लेके जाए
So Church Genius is not just a platform to get your articles published, to make your YouTube videos, but it's also the platform जहां पे हम इन लोगों को उनके सही डेस्टिनेशन तक कनेक्ट करें सर। और दूसरी बात ये है, हमारी जो खासियत एक और है कि हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही सिर्फ अपने YouTube वीडियो, यू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू आर मेकिंग योर YouTube वीडियो, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि इनको कस्टमर्स तक कनेक्ट कराना है। तो हम बोलते हैं कि हिंदी में बोलो वीडियो में, उड़िया में बोलो, असमी में बोलो, बांग्ला में बोलो, जो भाषा आप जानते हो उसमें बोलो, क्योंकि सब टाइटल्स वीडियो के नीचे ऐसे ही इंग्लिश में जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, आप जिसको वीडियो भेजना चाहते हो ना अपनी रीजनल लैंग्वेज में, वो भेज पाओगे। उसके साथ साथ वीडियो में अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी रहेंगी। If anyone is interested in you, he can get in touch with you directly without being involved. और गुरविंदर, जब भी हम बोलते हैं ना ये चीज, अभी आज का माहौल अभी ऐसा है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को हाईलाइट करना है, तो इमीडिएटली कंपैरिजन आ जाती है समथिंग लाइक योर स्टोरी, राइट? सो ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे दैट इफ यू हैव लाइक ऑलरेडी अ बिग प्लेयर, बिग ब्रांड लाइक योर स्टोरी, हाउ आर यू डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ? खासियत क्या है और अलग क्या है? ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है। ये मुझे लगता है कि रोज मुझे लगता है 2-4 बार तो सुनना पड़ता ही है। दिस इज समथिंग आई हैव टू हियर एवरी डे। 2-4 बार लोग पूछ ही लेते हैं कि यार योर स्टोरी तो यही कर रहा है, तुम क्या अलग कर रहे हो, है कि नहीं? तो मैं एक तो सैल्यूट है उनको जिन्होंने योर स्टोरी बनाया। श्रद्धा जी को बहुत बड़ा सैल्यूट है उन्होंने बनाया, एंड आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर। बहुत इज्जत करता हूँ कि हर इंसान को इज्जत करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज देयर हार्ड वर्क एंड वी शुड अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कंसेप्ट ये सर ये कि हम उस स्टार्टअप, मैंने जो पहले बताया कि हम उस स्टार्टअप पर फोकस करते हैं जो अर्ली स्टेज है, जिसने भी चलना शुरू किया है। हम उससे ये नहीं पूछते कि तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तुम क्या कर पाओगे। मुझे नहीं लग रहा कि तुम चल पाओगे। तुम्हारा कंसेप्ट बड़ा अजीब है, मुझे नहीं लग रहा तुम चल पाओगे। तो जब मुझे नहीं लग रहा तुम चल पाओगे तो मैंने तो उसको पहले ही तोड़ दिया ना। मैं उसको सहारा देने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ सर। मेरा काम है अर्ली स्टेज स्टार्टअप को फोकस करना कि हाँ तुम्हारा ये है, हम तुमको विजिबिलिटी दिलाएंगे, हम तुम्हारे YouTube वीडियो बनाएंगे जो कि दूसरे मीडिया आउटलेट अभी नहीं कर रहे हैं। हम तुमको इन्वेस्टर के साथ जोड़ेंगे, हम तुम्हारे मीडिया पार्टनर बनेंगे, जैसे तुम वेबिनार करते हो। तो जहां भी तुम चैट जीनियस का इस्तेमाल विजिबिलिटी के लिए कर सकते हो, वहां तुम आसानी से करो। मेरे से पूछो मत, तुम फिर भी करो, क्योंकि इससे 2 फायदे हैं सर। अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरों का भला कर रहे हैं तो आई एम टेलिंग अ लाई, बिकॉज इन द सेंस आई एम ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, बिकॉज आई एम इटसेल्फ अ स्टार्टअप। बंदा जब मेरे ब्रांड को 10 जगह लेके जाता है तो मेरा ब्रांड भी पहुंचता है, या अकेले नहीं जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। So we have to think that big. If he's, if he's having any webinar, he's having an online event, he's putting my logo anywhere. So I am also getting visibility automatically. And if you don't believe, sir, we've started in the month of February, or till today, we are from the first day. That is God's grace. I must say that is God's grace and my Father's blessing that we are running in a profit till now. Till today, we are a profit. क्या बात है? So when you say February, you started this year February. बिल्कुल सर, इसी साल स्टार्ट किया था। So just मतलब लॉकडाउन से 1-1.5 महीना पहले चालू किया। 1 महीना पहले स्टार्ट किया, और ये 7 महीने में हम आज प्रॉफिटेबल हैं। हमारे 6 ज्यादा नहीं सर 6-7 एम्प्लॉय हैं, उनको हम पूरी करेक्ट टाइम सैलरीज पे करते हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना है कि वी आर रनिंग इन अ प्रॉफिटेबल कंपनी डिस्पाइट द लॉकडाउन हैपनिंग इन बिटवीन। ओके, और फरवरी में स्टार्ट किया, आपको पता है सर मार्च में लॉकडाउन आ गया, तो हमारे पास वो समय नहीं था किसी के पास बात कर सकें, किसी के पास जा सके हम। बट with God's grace and our charges are nothing, next to nothing, क्योंकि अभी हमारा जो ये गोल है कि we want to spread, आप भी स्प्रेड करो एज अ स्टार्टअप, हम भी स्प्रेड करें आपके साथ साथ में। तो it's not that we are looking at a very huge margin, we are looking at a profit, नहीं भाई, no, we are just looking to sustain ourselves for the next 1 year so that we can grow. Once we have a name, you are going to get the name automatically along with us, sir. That is whole the idea of Untitled Genius। और जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आप खोल के देखो वेबसाइट पे, every content and every video has the contact details of the startup so that the people can reach directly to them without coming to us। तो उनको लगता है कि ये स्टार्टअप अच्छा, नीचे में कॉन्टैक्ट डिटेल है, बस फोन नंबर सब दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप तुरंत मेल करो, आपसे कॉन्टैक्ट करता है। और इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि हमने एक स्टार्टअप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें तकरीबन 100 स्टार्टअप्स हैं अभी तक, क्योंकि लोग आते और जाते रहते हैं, 100 स्टार्टअप्स हैं। तो ये हम क्या करते हैं कि आर्टिकल पब्लिश होने के बाद इस ग्रुप में उनको कनेक्ट करते हैं, तो ताकि दिस 100 स्टार्टअप्स कैन आल्सो डू बिजनेस अमंग देमसेल्व्स। और ये शुरू हो चुका है। Absolutely. So आपस में एक इकोसिस्टम बन जाता है ना, while they are waiting for investors, while they are waiting for an outside market, आपस में ही बातचीत चालू हो जाती है। या चाहे कारोबार करे, चाहे they can compare notes, चाहे they can discuss कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने कैसे संभाला, तो सामने वाला भी बोलेगा हाँ मुझे आया था ये 6 महीने पहले। तो करेक्ट सर। और दूसरी बात क्या है सर कि बहुत मेंटर्स ऐसे जो अपना एक्सपीरियंस लोगों को देना चाहते हैं, they need a platform where they can help people. So with God bless,
Today we have that kind of people who are giving mentorship to these startups. ये कोई और नहीं कर रहा है सर. हम उनको वो मेंटरशिप देते हैं बाकायदा. नो, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम अस, बट दे गिव देम अ मेंटरशिप एंड दे आर विलिंग टू गिव, बिकॉज दे से हमारे पास 38 साल का 40 साल का ज्ञान है. हम चाहते हैं कि आप उस ज्ञान को लो हमसे. सो वी आर कनेक्टिंग दिस पीपल. ओके, वी आर कनेक्टिंग देम. सो द होल आइडिया इज दैट कि आपका स्टार्टअप 6 महीने बाद बंद ना हो जाए. आप चलते रहो, आप चलते रहो. यही चल जीनियस का नाम इसका वही है, चल जीनियस. तो जीनियस करता रहेगा. ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, चलना चाहिए. सो गुरविंदर, आपसे वापस आएंगे सवाल पूछने. विल गो ऑन टू विश्वजीत. विश्वजीत, यू नीड टू जस्ट अनम्यूट एक बार. Yeah. Sorry, sir. Good evening. So, Vishwajit, Hi, sir. you just learned about the entrepreneurial journey for both Kaiser as well as Gurvinder, right? So, tell us, how did you begin your entrepreneurial journey? और इसके पहले क्या करते थे? और Sir, first of all, sir, thank you for this opportunity, sir. NASCOM has really been great in connecting the startups. So I also got incubated in the NASCOM last year, probably, and NASCOM helped me to connect with the investors as well. So बातचीत भी बना था, इन्वेस्टर के साथ बातचीत भी बना था. So yes, how did I start my journey? So first of all, sir, I did my MBA from university, and from my college days, I was more into co-curricular activities. So हाँ, जैसे जिसमें I used to manage all the things. So from that, sir, as I was into more co-curricular activities, uh, I had developed a keen interest in solving or like getting more into the public. So on those days, I used to solve my college things problems. Like कभी किसी का कुछ हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, ये सब. तो I was also been elected as the college representative. तो तब से yeah, I was among the college representatives. okay. So हाँ, तो तब से सर हमारा एक लगाव बन गया है कि कुछ ऐसा करना है where I can be helpful or where I can add value to people's life. So that was the concept. Yes, I had no idea, I had no clue how to start and where to start. So yes, I सिर्फ एक जज्बा था. Then I got recruited by Tata. Then I worked almost 1.5 years there, but I was not enjoying the job क्योंकि मुझे machines में काम करना पड़ता था. तो और जॉब क्या मुझे था? कोई रोल क्या था? सर वैसे तो मुझे टाटा फाइनेंस में मिला था. आई वाज हाँ, आई डिड माय एमबीए इन फाइनेंस. हाँ. सो हाँ, तो मिला था तो टाटा में. और मैंने मगर पहले तो फाइनेंस में मिला था, फिर हमको और भी सारे काम देखना पड़ता था. कोडिंग्स का भी थोड़ा बहुत मुझे आता था, तो उसमें भी हमको डिप्लॉय किया गया था. सो मगर मुझे मजा मजा क्यों नहीं नहीं आ रहा आया? था. हाँ, मजा तो सर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए सर, अगर पहले मैं ट्यूशंस भी करवाता था, तो ट्यूशन में क्या होता है कि आप जब जाते हो, कुछ आप एक करवाते हो, पैसा तो मिलता है, एंड देन द गार्जियन सेज यू लाइक आपके वजह से स्टूडेंट का बहुत अच्छा हो गया है. सो Yes. एक हाँ, दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स. हाँ, तो वो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था. हाँ, ऐसे ही है, मशीन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एक सिस्टम में गिर गया हूँ. हाँ, तो बस यही है. तो एक मोनोटोनस हो गया था. हाँ, मुझे वो खींच नहीं रहा था वो चीज. एंड इट डीप इनसाइड द हार्ट आई हैड एम्बिशन टू क्रिएट माय ओन वेंचर. सो बस मैंने घर पे बताया कि मुझे कुछ अपना कुछ करना है. तो घर से तो सपोर्ट मिला नहीं है. पहले तो अच्छा, मिला नहीं? हाँ, घर से तो कुछ भी सपोर्ट मिला नहीं था. अभी भी मतलब ऐसे ही बाय वर्ड सपोर्ट करते हैं, पैसा वैसा जब आते हैं तो कुछ और ही होता है सीन. तो अभी ठीक है, अभी भी अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है. तो ऐसा था कि मुझे कोई अपना कोई फैक्ट्री लगाना था. पहले ये था कि अपना कोई इंडस्ट्री होगा, कुछ होगा, तो इसमें बहुत पैसा चाहिए. मैंने काफी बैंक्स में कैपिटल प्रोजेक्ट चाहिए होती बनाया. है. हाँ, प्रोजेक्ट से. तो उसमें क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि मेरे पास था नहीं. एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट यू हैव टू गिव इट टू द बैंक. हाँ, तो आपको हाइपोथिकेशन बेसिस में देता है, तो वो मेरे पास था नहीं. तो वो तो ऐसे ही प्लान फेल हो गया. फिर हमने एक स्टार्टअप किया था जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था. वो था कि हम लोग आपका कोलकाता से हम लोगों ने क्या, हम आई बिलोंग फ्रॉम सिलचर. सो इन माय रीजन कॉमर्स के स्टूडेंट्स बाहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, सीए सीएस ये सब पढ़ने के लिए जाते हैं. तो हमने ठीक है. सोचा कि बाहर
बाहर में क्यों जाएगा, यहाँ यहाँ पर इंटरनेट से हम क्लास मंगा लेते हैं। तो इंटरनेट के फेलियर की वजह से वो वेंचर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर भी चल रहा है। आई डिड नॉट शट डाउन द वेंचर। तो फिर था कि एक दिन मैं ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे निकला और मुझे एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए घर से बोला गया कि यू गेट एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ डॉक्टर। तो मैं गया और हम लोगों का एरिया में मतलब तो ये कहाँ पे था? ये सिलचर में था या कलकत्ता में? सिलचर में। सिलचर में, ठीक है। हाँ, सिलचर में। तो क्या हुआ, मुझे घर से बोला कि आप एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाओ। हाँ, तो मैं गया और मुझे कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो मैं या तो कोई रिवॉल्व करता हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना कोशिश करता हूँ। तो ये बचपन से एक आदत है। तो मैं गया एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो उस डॉक्टर का उधर में हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा हेल्थ इंडस्ट्री थोड़ा उस हिसाब से अपग्रेडेड नहीं है। तो हम गया उधर में जाके, वो डॉक्टर अपना 20 टोकन देता है, 20 नहीं 15 टोकन देता है। तो हम सुबह सुबह बोला था घर से कि आप 4 बजे या 3 बजे चले जाओ। तो मैं कितना बजे गया था, ऐसे 5:30 ऐसा 6 बजे गया। मैं जाके मैं लाइन लगाया, लगा के देखता हूँ कि ये तो नहीं मिला टोकन, मतलब 15 टोकन था और मैं था 17 ना 18 नंबर। तो फिर मैं बोला कि क्यों मुझे नहीं मिलेगा, तो आप तो पहले बोलना चाहिए था। तो मैं सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ी एक दिक्कत है लोगों का पास। हाँ, लोगों का पास टोकन लेने के लिए उनको सर्टेनिटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट। फिर देयर वर नो सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, आई मीन प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द पेशेंट्स। हाँ, सो एक चीज लाइक बताओ, फॉर दैट डे हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू वेट? कितना टाइम वेट करना पड़ा वो डॉक्टर चेम्बर में उस दिन? वो मान लीजिए मोटा मोटी 1.5 घंटा मैंने वेट किया। हाँ, वो ओके। हमको 1.5 घंटा वेट किया। इसके बाद डॉक्टर का जो अटेंडेंट होता है वो आके चैम्बर खोल के उसने सामने जितना 15 आदमी था फर्स्ट कम फर्स्ट हाँ, सर्विस बेस में उसने टोकन दे सबको दिया। तो टोकन दे मैं दिया, तो हाँ। हाँ, मैं था 17 नंबर, तो मुझे मिला नहीं। बोलता है योर टर्न, आज का टोकन खत्म हो गया। वो तो कल फिर आई से आओ से वापस। हाँ, कल फिर से आ जाओ, आपको जल्दी जल्दी आ जाओ, आप 1 बजे 2 बजे आ जाओ, लाइन लगा लो। तो मैं बोला आप ये क्या सिस्टम हो गया? बोलता है नहीं, हम तो लोगों को बोलते हैं कि 6 बजे आओ, लोग आ जाते हैं आगे, वो तो मेरा कसूर नहीं है। देन आई थॉट दैट दिस इज वन प्रॉब्लम एंड देन आई स्टार्टेड टू रिकॉल, मतलब टू फाइंड आउट व्हाट मोर प्रॉब्लम्स आर देयर इन द हेल्थ इंडस्ट्री। तो देन आई थॉट लाइक ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, टोकन नहीं मिलता है लोगों को। फिर रूरल इंडिया आज भी आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द रूरल इंडिया इज नॉट कनेक्टेड विद द हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, नॉट इन सो मच इन अ गुड वे। उसको मालूम बिल्कुल। नहीं है कि कौन सा डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में है, कौन सा नहीं है। दूसरा बात क्या है, अब आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस में लिखते हैं, वो पैड में लिख के दे देते हैं पर्ची। पर्ची ये घूम जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है, तो डॉक्टर के पास वो डेटा भी नहीं रहता है। ठीक है ना, हर हर हॉस्पिटल्स में नहीं रहता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए R&D भी नहीं हो रहा है इंडिया में। ठीक है ना, बाकी अब दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेटा आर बीन सेव्ड एंड उसमें वो लोग R&D करते, स्टडी करते हैं फर्दर। तो ये सिस्टम भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि देयर इज अ बिग गैप। तो हमने क्या किया, एक डोर टू डोर डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया कि सर वी आर लॉन्चिंग वन वेबसाइट वेयर पीपल कैन फाइंड देयर अपॉइंटमेंट्स, यू जस्ट टू व्हाट वी नीड इज योर फोन नंबर। तो हमने बोला, पहले एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम बोल रहे हो कि अपॉइंटमेंट ले लेगा ऑनलाइन पे, ये तो क्या बकवास बात कर रहे हो, अपना नाम नहीं बता सकता है ये पेशेंट। हम बोला सर आप एक्सपीरियंस के लिए दे के देखिए ना एक। देन इन दैट वे इट स्टार्टेड कन्विंसिंग। पहले बहुत मुश्किल आया, एक लगभग 10 महीना तक कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं आया। फिर एक अचानक एक दिन अपॉइंटमेंट आया। तब मैं क्या किया, उस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए मैं अपना फार्मा में एक जॉब भी लगा दिया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया। सो ओके। 2 साल तक, हाँ 2 साल तक मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। उस केस में क्या हुआ, मैं पूरा घूम लिया नॉर्थ ईस्ट और मुझे डॉक्टर्स के साथ एक रिलेशनशिप भी बन गया। बन गया। और हाँ, लोगों को रजिस्टर करता, डॉक्टर्स को रजिस्टर करने लग गया। फिर अपना एक सैलरी भी आता था, उससे कैसे कैसे करके कंपनी चलाता था। और इस बीच में मेरा एक दोस्त जुएल सन, वो भी पार्टनर बन गया, वो भी फार्मा में था। तो वो जैसे बना, वो हमारा स्ट्रेंथ और भी बढ़ गया। और धीरे धीरे 1 साल के बाद हम लोगों ने
ऐसे मोटा मोटी आप 60 डॉक्टर को रजिस्टर कर लिया था, और करीब करीब आपका 2000 पेशेंट हम लोग जुगाड़ कर दिया था। तो ये था हमारा जर्नी। फिर क्या हुआ, देन नेक्स्ट ईयर, इट्स अ 4 year company right now, and we have been tied up with 1200 doctors. We are now operational in 3 states, हाँ, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और हम लोगों का इसमें पैनल है 1200 डॉक्टर्स, 3 लाख पेशेंट्स, and we are incubated over, we are also winner over this IIM, this competition also. We are in the process of getting incubated, नास्कॉम पे है, बंगाल चैम्बर्स में है, और हमको एक 50 लाख का एक ग्रांट मिला है असम गवर्नमेंट से, और एक ग्रांट मिलने वाला है। एंड वी रेज्ड a funding of 1 crore from from नेटफी। हाँ, तो ये, हाँ, सो ये अब तक ये है। और अभी हमारा टीम लगभग ऐसे सब मिला के, सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सब मिला के मोटा मोटी 19 आदमी का टीम बन गया है। 19 आदमी सो का। हाँ, अभी हमने सिर्फ इसमें, हमारा था अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम, तो हमने तो देखिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, वेबसाइट बना दिया, फिर ऐप बना दिया जिसमें लोगों का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। फिर देखिए हमने देखा कि देयर इज वन मोर बिग प्रॉब्लम, कि रूरल इंडिया, जो गांव के आदमी है, दे कुड नॉट कनेक्ट विद दिस ऐप एंड वेबसाइट। उनको ये इंटरनेट नहीं आता है चलाना। देन वी हैव कम, हाँ, वी हैव कम विद डिफरेंट सॉल्यूशन। हम क्या किया, अपना एक वॉलेट बनाया क्विको बुक का, और साथ में एक बुक बनाया जिसमें हर डॉक्टर का अलग अलग सा एक कोड होता है, ठीक है। फिर हम वॉलेट जाके कोई भी केमिस्ट को दे देता है गांव में, और एक बैनर से चिपका देते हैं कि आपको कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स का, आप वो केमिस्ट पे चले जाओ। केमिस्ट पे जाता है, जो केमिस्ट, उसका इंटरनेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो डॉक्टर का वो कोड देके, डेट देके, वो उसको सिर्फ पेशेंट का नाम और फोन नंबर देके एक मैसेज करना पड़ता है। सिस्टम क्या करता है, हाँ, उसको चेक करता है कि उसका अपॉइंटमेंट है क्या नहीं है, देख के साथों साथ उसको रिस्पॉन्ड करता है। इन दैट वे वी आर कनेक्टिंग रूरल इंडिया विथ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। फिर जैसे ही ये हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर क्या करता है, उसका सारा चीज क्लाउड में सेव होता है। प्रिस्क्रिप्शन, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें हमने डेटा एनालिटिक्स भी बता दिया। जैसे कि आप आए, आपका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का वो चीज वो लिखते जाते हैं, और ये अंदर पे आपका 10,000 डेटा पॉइंट, सिस्टम कैन गिव यू अ रिकमेंडेशन कि क्या क्या प्रोबेबल डिजीज हो सकता है। तो हम उस प्रिस्क्रिप्शन को सेव भी करवा रहा है, और अभी डॉक्टर और ये पेशेंट्स का अच्छा कनेक्ट भी बन गया है। इसमें हमने अभी दवाई भी बेचना शुरू कर दिया है। पीपल कैन गेट देयर मेडिसिन ऑनलाइन। हमने अपना वेयर हाउस बनाया, और साथ में अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया है, और डायग्नोस्टिक्स का भी अपॉइंटमेंट लगा दिया है इसमें। तो मोटा मोटी आप जोड़ के बोल सकते हो कि मोर ओवर वी आर ट्राइंग टू, ट्राइंग नहीं, हमने बराकबली में भी तो सॉल्व कर दिया है तो थोड़ा बहुत। हाँ, तो बराकबली ये, देन वी आर ट्राइंग टू मेक इट वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल हेल्थ केयर नीड्स। सो दिस इज आवर मेन मोटो, एंड टू एन एक्सटेंट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड थोड़ा बहुत तो चल रहा है, बस यही है। सक्सेसफुल मैं हुआ नहीं हूँ, बस चल रहा है। No, चल रहा है successful बस काम। definitely here because you've won so many accolades, you've won awards, you've won grants, and you've connected so many people. See, finally, more than the numbers, numbers are very important, but more than the revenue numbers, you have such a big panel of doctors, right? And you have lakhs of patients who are there on the system. जो platform का फायदा उठा रहे हैं, जिससे benefit हो रहा है उनको. हाँ हाँ Lakhs of हाँ हाँ। patients. That is the biggest impact that you're doing. That's really, really commendable. That's very inspiring. Kaiser, थैंक यू सर। आपके पास वापस आते हैं. Let's delve more into the details of your firm. बिजनेस मॉडल समझाइए, टीम क्या है, कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है टीम, ये सारी चीजें समझाइए। कैसे you're on mute, अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट पे हैं। Right. So yeah. So there are a team of 10 people, sir. From from creative heads of a big company called Glitch, and from people from Oracle as well. People from people have worked on various IT projects like popular projects, right? So
So that is how the structure of the company is, and we are being mentored by Alan Mamadi. He's the I mean, he's the CEO of Truecaller. So he is mentoring us as of now. I mean, he likes the idea. He he motivates us as well. I mean, Mhm. so so the structure of the company is basically, so I mean, what we're trying to do with Bay is we're trying to help people with their daily needs. We're trying to build a platform for SMBs. So it's a B2B and B2C business structure. Okay. And so yeah, that's it. Yes. So can I take a B2C example? So I'm an individual customer, right? And obviously, me, like many other customers, like millions of other customers, will have lots of daily needs. How could Bay help someone like me? Okay, so, suppose you need eggs and milk in the morning, Okay. right? So Hmm. basically, you would go on a generic website and browse and everything, do all of that stuff. But on Bay, you just have to tell the assistant that Bay, deliver me two packet of eggs and one milk, right? So Bay will schedule the whole delivery process, and the milk would be delivered tomorrow. And the another part is that we are on putting online brands as well. So suppose, I mean, so the combination is the local stores and the online stores, Hmm. right? So suppose if I so right now, if you search on Google that I need socks, right? So Google will only show you all the stores, I mean the online stores, right? But Google won't be able to find like which shop has which shop has this socks, like a white socks, right? But we have that information. We have that information. Why? I'll tell you why. Because I started from Pune, right? So Hmm. I walked the whole I walked the whole city step by step and covered the whole city, and structurized and mapped all the information, right? So that is how we're mapping it, and that is how people can find it. So people can find minute of the minute information inside this city, as well as the online information on a single platform. Okay, great. So tell us in terms of some of the numbers. So let's start with B2B because you've got both B2B as well as B2C. So in terms of B2B, what are the numbers that we're looking at? कितने collaborations हैं आपके कितने partners हैं Right, right, right. customer So base पे we बताइए. have 85 plus offline vendors as of now. 85 plus. So we started our operations on 5th September. This, I mean, this month itself. We started on 5th September, and it's been 20 days uh, uh, dot, and we have 85 vendors offline and 6 online brands with a contract of 1 year. So we are going pretty much right now, pretty much well as of now. And the brands which we have, I mean, they are very reputed brands, as in say called Plum. So Plum is a brand in fashion, in beauty, right? So celebrities advertise about Plum and how it can be helpful for your skin. So we have brands like these. So 6 brands cover these, and all, I mean, the popular stores in Kurgaon. So we are covering Kurgaon as of this moment. So the popular stores in Kurgaon, and we are expanding day by day. So our target is to cover the whole city, and help people find all the stuff they need instantly. And because Mhm. it's a lockdown and everything is going on, we are here to help, because you can see, like, not all the offers have been fulfilled by other companies, because there's a gap, and people face problem, so we are here to solve. Absolutely. So, Kaiser, Right, speaking of lockdown, right, as we all know, this pandemic has hit everyone hard. But perhaps right, in terms of the ecosystem, one of the strongest, the hardest, most adverse impact has been with the startup community, right? Because of their budget right, constraints, because of capital shortage, because of funds, cash flow, and because they are the ones who need this kind of incubation, and they are the ones who need this kind of sustained market most, right? right. So, what has been your own experience is lockdown ke dauran and currently now in the new unlock mode? What are some of the lessons Mhm. learned? I mean, it's been really tough. I mean, because on
porting business over a cold call is pretty tough, as you can understand. So it's been tough, and but since I have a tech business, I mean it's a tech play, so there are no logistics involved because there's a third party in place which helps us with all of that. So I mean the only problem is the communication problem because basically we were at a single place and things were done in 5 minutes. जो अभी time लग रहा है, it's like someone is calling and someone is picking and someone's internet connection is wrong. Right. So all that things are messing the time up, and I mean it's tough, and at the same time it's quite convenient as well because you're at your home, in your space, in your comfort zone, having all the luxuries at home. But at the same time, it's 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 a pain as well because when you're doing a very professional work and when you're solving a problem, when you're trying to provide value to a consumer, you have to have your team all around, right? Absolutely. Absolutely. Yeah, that's very important. Okay, Kaiser, we'll come back to you for another round of questions. Tab tak, Gurvinder, we come back to Tell Genius. So let's do a live scenario. ठीक है? तो गुरविंदर, मैं आपके पास आता हूँ and I say मेरा एक स्टार्टअप है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है. Okay, it's in the HR technology space. We have been working kind of behind the scenes because of lockdown and everything else, right? This is on the HR tech space. It's working like an app. ठीक है? Technology play है. And I want you to take our product, take the value proposition of our offering out there into the market. तो आपका क्या सलाह होगा and what is your approach? How do you actually go by it? Is that totally audible, sir? थोड़ा सॉफ्ट है, वापस से बहुत फेंट आ रहा है आवाज. अभी ठीक है, थोड़ा जोर से बोलूं, ठीक है अभी? बेटर है, हाँ बोलते जाओ. हाँ, थोड़ा सा इश्यू है आज भी. सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पहले मेरे को ये जानना होगा कि आपको व्हाट स्ट्रीम यूर वर्किंग है. कोई मेरे पास पहले आता है, सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, whether it sounds sensible or not. अभी मुझे याद है कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया. ओके, he was from हैदराबाद. उसने बोला सर मैंने एक ऐसा एक ऐसा ग्लास बनाया है. आई हैव मेड अ ग्लास, दिस चश्मा, जिससे मेरे घर के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे. ओके. तो मैंने कहा अच्छा? क्या करोगे मेरे भाई, पहले ये तो सोचो. नहीं सर, मुझे चश्मा से किसी को बाहर निकालना होगा, बाहर निकाल दूंगा, गेट बंद करना होगा, बंद कर दूंगा. इट साउंडेड सो फूलिश. मैंने कहा ये यार तुम्हारा आर्टिकल मैं छापूंगा तो लोग मुझे बाहर निकाल देंगे कल कि क्या ये लोग कर रहे हैं. So first of all, whoever come to us, we ask that is it in prototype stage? We have no issue, but you should sound sensible. For example, we did an article. Yes, for example, we did an article of Jadavpur University students in Calcutta who are making, this, the kind of plastic you use for e-packing of goods. Okay, the e-packing. अब जो Amazon और में जो प्लास्टिक आता है, वो क्या कर रहे हैं सर कि वो चिकन का जो फेदर्स है उससे उस प्लास्टिक को बना रहे हैं. The discarded feathers of chicken. Okay. It sounded like a very good concept that they are trying to clean the environment also. At the same time, this plastic is biodegradable. So ये आपको environment को loss नहीं करेगा. It was a very good concept. Right. They had not started yet. I said no, it's a very good concept. I want to write about it. So first of all, my question is that what we are doing, it sounds sensible or not. Okay. And I'm very very sure or very practical or very very approachable towards the startups from tier 2 and tier 3 cities. अगर कोई मेरे पास जयपुर, कानपुर, नॉर्थ ईस्ट से आता है तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंगलोर, बॉम्बे को बहुत माइलेज मिल चुका है. आज आपको इन सिटीज को भी देखना होगा कि यहाँ से स्टार्टअप जो निकल रहे हैं. आज बिहार के छोटे गांव से, गया से, पटना से, और कहीं से भी कोई आता है तो मैं आई प्रेफर फर्स्ट. आई सेड नो, बैंगलोर बाद में आएगा, तो पटना शुड कम फर्स्ट, बिकॉज वी नीड टू गेट स्टार्टअप फ्रॉम देयर. ये हम उसको प्रेफर पहले करते हैं. ठीक है, उसके बाद सर हम क्या करते हैं कि हम उसको कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं. हम बोलते हैं यू आंसर दिस क्वेश्चंस, गेट बैक टू अस, लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप करते क्या हैं थ्रू योर आंसर्स, एंड देन वी कैन स्टार्ट योर we can start you putting up. So we charge very minimum charges. Our charge is just rupees 2,000 for 3 months. In this we give you YouTube videos. In this we make your article. In this we we make you you can make us as your media partners.
we try to connect you with investors. ये सब कुछ सिर्फ 2001 for 3 months. So the whole idea ये है कि let's see that whether this guy can spend something or not, or whether he exactly चाहता क्या है, इसका thought क्या है. Taking 2,000 rupees is nothing. We cannot even recover operation cost. But the whole idea was that whether this guy is serious in the business or not. Bilkul. So you are giving me that platform, right? And you're launching the product, you're launching the services, you're launching the offering. Now let's go back to something else that you talked about earlier, which is connection within the ecosystem and connection to the investors. जहां से पूरा growth hacking हो सकता है, right? To the market, to the ecosystem, and to the investors. तो उसका approach क्या है? And would you like to give any kind of a use case or a case study जो हाल ही में किया है आपने? Any that you want to highlight? Correct. Very relevant question. So what we are doing that we have made, as I told you before, that we have made a group of startups. Okay, I told you before that when we connect the startups. Similarly, we have also made a group of investors, Shell Genius Investors Group. Okay, अब वहां से क्या है कि whatever investors को हम contact करते हैं उनको हम group में add करते हैं. Okay, and now once the article of this guy after being published is being forwarded in that group. Okay. And if is interested, they both can talk to each other. We have no issues there. We can connect them there to the phone number. We can connect them. We don't go beyond in that. How you have to make a pitch deck. This depends upon the investor and how to make it. How whatever. अगर उसको pitch deck है तो बढ़िया है. So it depends on how they will do it from their side. The media, our work is giving them connection, so we give them connection from that side. Okay. Now, as you talked about, I think you have also talked about giving them a targeted audience. जो आपने मेरे से सवाल किया, हाँ, वो अब हम कर रहे हैं सर. कि मेरा ये थॉट आया क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे. ठीक है, एक एक करके जब आप चलते हैं तब आप सोचते भी हैं और इम्प्रूवमेंट करते भी रहते हैं, है ना. वो एक कहावत है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की और लोग मिलते गए और कारवा बनता गया. तो वही वाला हाल है हमारा भी. कि when I thought about it, I just thought about it that the startups need a platform to promote themselves. I never thought that I'm going to make this investors group. I never thought that I'm going to do YouTube videos, because my whole concept is to give them a platform. And then slowly we started with this, and now the next approach is to give them to connect them with the target people. That's what we're working for now. हम हर लोग से कनेक्ट कर रहे हैं, पेड एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं सर. मैं क्योंकि ये समझता हूँ, आई एम नॉट अ स्टार्टअप. अगर आप मुझे सही बात पूछे तो मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले 10 महीने पहले ही आया हूँ. ठीक है, बिल्कुल. And even today I'm a journalist who loves to write about about the daily stories, who loves to write about because my issue is practically environment. I write on environment issues. I love to write about environment, love to travel. पर सर ये इसकी स्टोरीज करने से भी सॉल्यूशन नहीं होगा और इनको इन्वेस्टमेंट लाने से भी सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक इनको मार्केट नहीं मिलेगा सर. Gurvinder, एक चीज बताइए. You came on board, right? You actually launched your company around the February time frame. और मार्च से एंड फ्रॉम एंड ऑफ मार्च फिर लॉकडाउन में चले गए, राइट. एंड पूरा सारे डिसरप्शन हो गया. तो इस पूरा जो लॉकडाउन के दौरान है, ये पूरा जो पेंडेमिक के दौरान है, हाउ आर यू एबल टू कोप विद इट? और फिर कोपिंग से लेके आज जो कामयाबी तक आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. उसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट सॉस जिसको पूछते हैं, उसका सीक्रेट सॉस क्या है, बताइए. सर मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, करेक्ट. मैं अपने आप को बहुत किस्मत खान नहीं समझता हूँ क्योंकि मैं भी शुरुआत किया हूँ. मैं भी आपके साथ शायद विश्वजीत और कैसर से मैं बहुत पीछे हूँ. ओके, लेकिन मैं एक बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि इंसान को छोटे छोटे कदम रोज रखने चाहिए सर. भले ही वो कदम कितने भी छोटे हों, वो जब हम पीछे मुड़ तो कदम बहुत बड़े नजर आते हैं. तो हमारा एक रोज जो मैंने आपको बताया कि वी आर स्टिल इन प्रॉफिट डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन हैपनिंग. वी आर स्टिल इन प्रॉफिट. इसका सिर्फ मकसद ये कि हमारे एक सोच रहती है कि आज हम 10 नए लोगों से जुड़ेंगे. मैंने भी टीम को बोल रखा है 10 नए लोगों को मैसेज करो, 10 नए लोगों तक जुड़ो. तुमको 10 में से एक भी बंदा मैसेज करता तुम्हारा काम हो गया. अगर तुम एक बंदे से रोज जुड़ते हो तो तुमने 30 बंदों से तुम 30 बंदे you end up getting up 30 people at the end of 1 month. Okay, whether it's from NASCOM, whether it's from BGCI, anywhere you end up getting 30 people. Well, and you also get connect with 30 startups. If you're connecting with 10 people, 10 startups every day, you get in one response, you get connections with 30 startups. Out of these 30 startups, even if 10 comes to your platform and you get the money, you're still in a smooth sail. Okay, so this has been our funda that we do. We work every day. Every discipline work we do. कि हमको आज इनसे बात करना है. We make a schedule कि हमको इनसे बात करना है, कल हमको इनसे बात करना है, कल हमको स्टार्टअप को अप्रोच करना है. तो ये जो सर है एक स्ट्रेटेजी है. समझता हूँ कि ये चलती रही और ये चलती रही. इसको बोलते हमको लॉकडाउन में उतना इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट वी हैव ग्रोन.
In the lockdown we have grown, sir. If I'm today, we have grown, sir. We have not stopped. अब ये था कि हमने लॉकडाउन को किस तरीके से लिया कि भाई लॉकडाउन है. अब ये सब बहुत ही कॉमन थिंकिंग अभी जी ये माइंड में आ सकती है कि भाई अभी स्टार्टअप शुरू किया और इधर लॉकडाउन हो गया. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हाँ, तो अभी तो ये गलत टाइमिंग हो गया. मतलब दिस वुड हैव बीन द वर्स्ट टाइम ये करने के लिए. तो एक बात तो जहन में आता ही है ये. हाँ, लोग बोले कि यार सरदार जी तुमने क्या काम किया यार, तुम भी अजीब आदमी हो, है कि नहीं. बट दैट वाज नॉट द केस. आई थॉट दिस ओके लॉकडाउन है तो है, पर ये हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में जो काम है वो तो हम कर सकते हैं. हमारा काम है कनेक्शन करना स्टार्टअप से, उनसे मिलना. इट्स वी शुड मीट, बट वी मेड लॉट ऑफ वर्चुअल कनेक्शंस, वी मेड अ फोन कॉल. हम आज भी हमारा देखें, हमारा जो भी आर्टिकल वी पब्लिश इन ऑल आवर सोशल मीडिया एवरी डे, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप जो फेसबुक ग्रुप्स हैं हमारे, उन सब में हमारा आर्टिकल जाता है सर एवरी डे. So somehow, even some people get connect with us and that creates an impact, sir. तो ये वो छोटे छोटे कदम है जो हम रोज करते रहते हैं, छोटे छोटे से काम. absolutely, and that's great. Bishwajit, let's go over to you. And we were talking, so now we are actually talking about the pandemic times. Now, pandemic times में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. It becomes absolutely critical for people, particularly in remote places, particularly in the Northeast, to have access to medicine, to have access to diagnostic centers and clinics, and above all, to have access, timely access, right, to the medical practitioners, doctors and nurses. So tell us about, Bishwajit, you're on mute. Just unmute kar lo. You're on mute. Okay. Yeah. So tell us about your experience in terms of what you've seen during this entire lockdown. Vishwajit, you've gone off cam. All right. So the thing is, right, viewers and everyone, this is the time of monsoon. So it's entirely possible that we get junked out. So what we'll do is, while we're waiting for Vishwajit, there's another round of questions that I personally had in mind, which has to do exactly with what Kaiser and Govinda were saying, is having the resilience within oneself, having the conviction within oneself that there's so many things which are beyond one's control, but we can do and we can work on what is within our control, right? So again, Kaiser, maybe I start with you. In today's age, in this state, there are millions and millions of people who are losing jobs, but equally, there are a lot of startup founders who are really being hurt. And many of them are at a stage where they're thinking that, okay, maybe I need to shut down shop. Maybe I need to look for a job. Maybe I need to have a gig. Anything just to keep, the ball rolling. Guys, just unmute yourself. So what would be your suggestions to them? What would be your advice to them? People who are facing a lot of hardship and are just at the point saying, okay, I can't take it anymore. I have to give up. बहुत लोग ऐसे हैं. बहुत सारे स्टार्टअप की ये हालत है. You know this. I mean, so this is a question which depends on the condition of the specific person, right? I mean, not. I mean, a generic answer would be injustice to this question, but all I would say is like if people are disheartened, so I mean, there's a quote that when something's going pretty much wrong, the best part is about to start, right? So that is something people can keep in mind. And uh, talking about people shutting shops and finding gigs and jobs. I mean, it totally depends on the situation of the person. Because in my case, if I see, I have a background where family can support me, but not everyone can. Not everyone is so blessed, right? So different people, different situations, but we need to, I mean, hold on to ourselves and hold on to our dreams and have trust in us. And try to do as much as possible and try to bring out the I mean, I, at least even try to bring out the best. I mean, it's up to the I mean, it's totally up to the condition, the situation, and it's up to the god
Almighty God, like what happens. So I mean, just be strong. Absolutely. That's Hello, it. sir. So we're going to, yeah, Yeah, Biswajit, is it? yes, yes, it's Sorry, audible sir. now. Sorry, sir. Yeah, there was a power cut in my center, sir. I don't know why it happened. Anyways, Okay, okay. now it's It happens. it's So, Vishwajit, the question that I was going to ask you is, what was your experience during this entire lockdown period, during this pandemic time? yeah, What was yeah. your personal experience, and how are you helping the ecosystem during this Yes, very yes, difficult right. time? So what happened is like as we work in the health industry, so it was like not much we suffered, I must say, than the other industries. So yes, we have implemented two main things. One was like we were trying to bring online consultation to solve the Mm-hmm. problem, because as it was pandemic. I mean, people were asked not to come in contact. Uh, they were asked to stay at homes. So this is what we have tried to brought it down online consultation. And one more thing we had implemented is like, before you go to the chamber in case of any emergency cases, so we have implemented a very unique solution is like live tracking of your appointments. So whenever you take an appointment, you can track Mm-hmm. what is the recent status of your appointment just from your mobile app. So these two features we have brought down, and yes, positively we have got a huge sales turnover in this due to this lockdown on our medicine. So and we have got a boost in the medicine sector. So this was quite in one sense it was like welcoming for us. We have come up with two more features, that is online consultation, and one was live tracking of our this appointments, and third was like it was boosting our business. So that's Okay. the case. Great. So, And Biswajit, tell us a little bit more about the online tracking, right? So, for example, yeah, if I've got an appointment today for, let's say, 8 p.m., what would fine. that system show me? Would it show me if I'm being delayed or if it's been cancelled or the doctor hasn't arrived and I have to, or, Yes, what would be that there? sir, what we क्या have बताएगा is वहाँ पे? like, हाँ, उस पर दो तीन चीजें है सर। एक है कि पेशेंट जैसे अपॉइंटमेंट लेता है उसको एक ऐप मिल जाता है। अभी जो रूरल पेशेंट्स है उनको मैसेजेस मिलता है, जैसे ही वो जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है, हाँ, हर 5 अपॉइंटमेंट्स के बाद, ठीक है। Okay, अभी क्या okay, है कि एक डॉक्टर के पास एक एप्लीकेशन रहता है हम लोगों का, क्विको बुक का, एक पेशेंट के पास रहता है। डॉक्टर का जो अटेंडेंट है वो जैसे ही पेशेंट अंदर जाता है वो लाइव ट्रैकिंग ऑन कर देता है कि अभी ये 2 नंबर गया है, ठीक है, अभी 3 नंबर गया है। तो उसमें क्या है, आप अपना ट्रैकिंग कर पाओगे कि अभी कितना चल रहा है अपॉइंटमेंट। सो दिस इज हाउ वी मेक द लाइव ट्रैकिंग अपॉइंटमेंट। एंड okay, जो मैंने बताया ऑनलाइन कंसल्टेशन, वो कुछ नहीं है, एक वीडियो कॉल के जैसा है, बस पेमेंट मोड हम लोगों ने लगा दिया है। okay, जो okay. जो जो एक्स्ट्रा काम हम करना चाह रहे हैं, दैट इज Mhm. व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द हेल्थ इंडस्ट्री इज लाइक, अभी क्या है कि डेटा लोग रखते नहीं है। हम लोग का क्या है, मान लीजिए आज आप गए तो आपका बुखार हुआ है, तो बुखार किस चीज से हुआ, आपका स्नीजिंग है, फिर आपका मान लीजिए हाई टेम्परेचर है। तो हर सिम्टम्स का एक प्रोबेबिलिटी होता है कि ये डिजीज हो सकता है। तो ये क्या है कि आफ्टर 10,000 डेटा पॉइंट्स इट विल फॉर्म ए ग्राफ कि Okay, अच्छा, हाँ, so that graph will help doctors for giving an indication कि क्या क्या उसको बीमारी हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका वो बीमारी होने से पहले आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसमें आपका फेलियर चांसेस कमती हो जाता है और टाइम एंड एफर्ट कम लगता है डॉक्टर में। तो बिल्कुल। ये अभी हम So लोग का I think, प्रोसेस चला हुआ है। हाँ, वो right. प्रोसेस So I चला think, हुआ Biswajit, है। this is, yeah. So I think, Biswajit, this is a great thing, and I'll tell you why. और भी platforms हैं that I'm aware of, even within the startup ecosystem, that is actually connecting patients and doctors, or connecting patients to service providers around diagnostic clinics and medicine, etc. But everywhere, I think ahm baat jo hai is the data. If you don't have the data, then you can't analyze it. उसको farm नहीं कर सकते, वहां से predictive capability नहीं आएगा, वहां से pattern नहीं निकलेगा, और pattern नहीं निकलेगा, then you can't act on it. I think that is a huge thing. 10,000 record आपका ये है, that 1 लाख record होगा, 1 million record होगा. The हाँ, power of the data
will allow you, will enable you to transform lives in an even more meaningful way. है ना? We're trying, sir. Let's see. बिल्कुल बिल्कुल नहीं I can see the success. Trying नहीं कामयाब है. Okay, one thing that I wanted to ask you is, you said that you were very lucky, very fortunate that even during the lockdown, and particularly because of medicine sales, etc., so your business was doing well, right? The revenues have gone up there and you're sustaining yourself. But there are so many startup founders आज की तारीख में जो एकदम निराश है, right? Their revenue has stopped, their business has stopped, they don't know how to turn. तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या बोलेंगे? सर देखिए ये तो सर दिस इज समथिंग इट वाज अनसर्टेन. वो तो ऐसा नहीं है कि सर्टेन रिस्क है दैट यू कैन कैलकुलेट, आई एंड यू कैन कैलकुलेट. यस वी वर लकी, वी वर वर्किंग इन द हेल्थ इंडस्ट्री, सो ऐसा इतना हमको तकलीफ हमको भी वो हुआ है, मगर हमारा दूसरा जगह से हमारा व्यापार आ गया है. तो अभी आप मान लीजिए नया कोई बिजनेस है जैसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके लिए मैं यही बोल सकता हूँ. इट वाज नॉट माय से, इट वाज मे बी रतन टाटा सेठ कि आप इस इंडस्ट्री में अभी सरवाइव कर रहे हो, देन यू आर सेफ. तो आप धीरज रखो, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहो. मतलब उसको मान लीजिए 7 दिन आना पड़ता है, आप आपका ऑफिस में काम नहीं है, तो आपको बोलिए कि आप 2 दिन आइए, आप सैलरी कम से लीजिए, तो पे कट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. समहाउ यू हैव टू सर्वाइव. और आप देखिए कि उस केस में आप कैसे मतलब आप सोल्यूशन दे सकते हो. जैसे कि आजकल ओयो क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं रूम्स को. दे आर ट्राइंग, यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट सोल्यूशंस. हाँ, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता भी है. सो हाँ, वो आपको सोचना पड़ेगा आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम कहाँ पे एडिशन करने से पीपल का लाइफ में हम थोड़ा असर ला सकते हैं. ठीक है ना? और ऐसा, और गुरविंदर जी ने ऐसा एक बताया कि आप क्वासिड और विश्वजीत का स्टार्टअप के जैसा नहीं है. ऐसा नहीं है. कंपटीशन अगर होना है तो खुद से होना पड़ता है. ऐसा होने से तो आप दूसरा क्या कर रहा है उसमें आप नजर मत देना चाहिए. हम कैसे दूसरे लोगों का लाइफ थोड़ा सुधार ला सकता है, थोड़ा उन लोगों का लाइफ में सोल्यूशन ला सकता है, तो पैसा ऐसे ही फ्लो होते जाएगा. इन्वेस्टर्स आपका कोलकाता से हम लोग का कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी बार इंटरेस्टेड थे, आज भी इंटरेस्टेड है. तो हमारा स्टार्टअप बड़कबिली में है और हमें तो डेट फंडिंग मिला, हमें अच्छा प्रपोजल मिला जहाँ से उसको से हम लिया है पैसा. हाँ, तो फंडिंग तो मिलेगा ही, और अगर आप सही तरीके से सोल्यूशन देंगे पैसा आपके पीछे आएगा ही आएगा. तो पैसे के बारे में इतना बिना सोच के सोल्यूशन देना, और कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए कि कल में किसमें था, प्रोग्रेस होना पड़ेगा. हमेशा हम लोग एफर्ट दे सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ पे है नहीं. ये मेरा नहीं है, ये जितना एफर्ट्स हम लगातार देते जाएंगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा. और निराश नहीं होना चाहिए, बस यही है मेरा. Absolutely. There are hell lot of ways. You can find. There are hell lot of people. आदमी भी है, जैसे आप लोग भी आज करवा रहे हैं ये सेशन, तो आप लोग को हेल्प ही कर रहे हैं ना. तो ऐसा बहुत सारे आदमी है कि आपको हेल्प करना चाहते हैं. तो आप राइट इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो हो जाएगा. थोड़ा मुसीबत आता है, हमको भी मुसीबत सहना पड़ा, ऐसा नहीं है. बस यही है. Right, absolutely. So Gurvinder, we'll come to you we are coming close to stoppage time. We'll come to you for the last word, right? अभी इस दौरान, right, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और पूरा इकोसिस्टम जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो एकदम घटा पड़ा है, डूबा पड़ा है. So आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या बोलेंगे? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा सर. मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आई टोल्ड यू दैट कि वी वर आल्सो न्यू ना. कोविड हमारे लिए हम पिछले साल नहीं थे, तो वी वर न्यू. तो हमारे एक फायदा ये था कि हमें पता ही नहीं था कि बुरा क्या था, क्योंकि हम तो सीख रहे थे उस समय. वी वर न्यू दैट, तो वी न्यू व्हाट वाज द बैड फेज, यू नो, लाइक जो those who are already in the business know that this is a bad phase, but for us this was just a phase because हम तो नए थे. तो we were just a new guy, so we didn't have any past experience ना कि पिछले साल हमने इतना बिजनेस किया. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वो आर्टिकल हमारी साइट पे भी है. There are some girls from Jaipur, okay, so they are from college going girls. They started a startup of offering food in their college में वो खाना सप्लाई करती है, डिलीवर करती है. अब कोविड आ गया तो उनका जब कोविड आ गया तो उनका the college is closed down, so they had no option. The college closed down, everything is still closed, so what to do? The business is shut.
अब उन्होंने क्या किया, अच्छा, द फूड दे यूज्ड टू प्रिपेयर वाज फ्रॉम द होममेड फूड, नो, द स्टूडेंट्स जो बाहर रहते हैं दूसरे शहरों में, आपको होममेड फूड मिलेगा, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे वर डूइंग, यू नो, दे हैड अ कॉन्टैक्ट विद दिस मॉम्स, शेफ वुमेन. अब क्या हुआ, जब ये बिजनेस बंद हो गया सर, दे हैड नो अदर अल्टरनेटिव बिकॉज द बिजनेस इज शट. So I praise these girls that they found an alternative. Two girls are there. I praise them. They found an alternative. That why don't we start, you know, start giving the home delivery of the homemade of the food which is being cooked by women. Because हम सब घर पे, हम सब घर का खाना खा रहे हैं, तो वो बाहर के खाने की हमें सबको आदत है नहीं, वो तो किसी को मिल नहीं रहा है. तो उन्होंने बोला कि जो बाहर का खाना है, ये जो वुमेन बनाती हैं, हम क्यों ना इस खाने को होम डिलीवर करें. देयर बेस्ड इन जयपुर. उन्होंने किया. आज वो प्रॉफिट में नहीं है, पर वो उन्होंने ब्रेक इवन कर रहे हैं, वो लॉस में भी नहीं है, दे मेड ब्रेक इवन. तो मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ सर किसी को, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया. उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया कि ये नहीं तो वो. तो मैं भी यही, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इंसान जब टेंशन में, दिस वर्ड्स वेरी इजी टू से, टेंशन है, ये वो है, बिकॉज बट उसका क्या, जिसने करोड़ों रुपए लगाए हैं बिजनेस में और जिसको लॉस हो रहा है, we cannot be in their position. So it's very easy to say, but it's very difficult to step in their shoes because that guy has invested millions and billions of rupees. We cannot just sit and speak about him that नहीं, तुमको टेंशन ही लेना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए. टेंशन होगा, क्यों नहीं होगा? They invested millions of rupees. It's very easy to some paper that टेंशन मत लो, but practically टेंशन होगा. तो सॉल्यूशन ये कि भाई देखो कि उसको मॉडिफाई कैसे करें. मेरे पास एक स्टार्टअप और है सर, you know, you can still check on my site. He's a guy called Samir ji. He has a business of perfume, you know, essential oil से वो परफ्यूम बनाते हैं. अब उनका बिजनेस कोविड में इम्पैक्ट हो गया. उन्होंने अब एक ऐसा, मतलब एक परफ्यूम बनाया है, एक ऐसा सेंट बनाया है जिससे आपका वायरस किल हो जाएगा. आप उसको रिफिल करिए, उससे आपका वायरस किल हो जाएगा. तो उन्होंने भी मॉडिफाई किया, फिर बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं सर. तो वही सलाह कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ सलाह देने वाला, वेरी स्मॉल मैन, बट इतना ही है कि मॉडिफिकेशन हर जगह की. ये प्रोडक्ट नहीं चलता, अब समय के साथ कैसे ढालें अपने आप को, पानी कैसे बन जाए कि जैसा पानी हर जगह ढल जाता है, तो यहाँ से नहीं तो वहां से कैसे, यू नो, हाउ टू मॉडिफाई. ये जो एग्जांपल मेरे पास बहुत अच्छे थे कि हाउ टू मॉडिफाई द बिजनेस. बट ये भी मैं सच बोलूंगा कि सर ये भी बहुत सच है कि हर जगह मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है. बट मुझे लगता है बहुत सारी जगह में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है. तो अगर जो भी है, अब ये कोविड एक ऐसा नॉट कम कि ये 2 महीने बाद चला जाएगा, है ना. ये बहुत लॉन्ग टर्म. Absolutely. So this is something that we all have to live with. So from that standpoint, I think across all three of you, what you're saying is right. It's very important to have hope, to have the courage, to have the self-conviction, to have the grit, to have the resilience. And if you have that, then you will have the curiosity, you'll have the open-mindedness. Wherever it's possible to modify and calibrate and adapt, be flexible, you'll do that. Wherever it is possible to innovate, you'll do that. Wherever it is possible, or wherever rather this is not possible, you'll look out for new opportunities, and you can, because there are always opportunities. As you said, right? If one door opens, one door closes, the other will open up for you. So new opportunities will also open up for you. And hopefully, even during this time, a lot of our startup founders will be able to make good and find their place under the sun. So on that note of optimism, I'd like to conclude this. So viewers, I hope you enjoyed this session of Startup Speaks. We'll be back again, same time next month for another episode. Until then, I'd like to thank all of you, and particularly a big thank you to all our participants. I know today was a slightly turbulent session because this is something that is always going to happen during the monsoon times, right? I, for a change, didn't get junked out because of the internet issue, but that happens as well sometimes. Gurvinder, Bishwajit, Kaiser, a very, very, very big thank you to all of you. God bless. Thank you. Succeed a lot in your future endeavors and in your current ones. Thank you, sir. And bye-bye. Bye-bye.